So we are going to continue where we. So last time we just had how we tried to understand the general or the stationary states of this wave function psi. So here in this class we are going to have a bit of how we can construct these solutions of Schrodinger equations in some concrete sense or in some particular sense. For example, before we are going to say something, so there are a couple of points. For example, so the state of the particle is represented by, if you want to say this psi, it's represented by exponential of minus iota h. So if you want to write it in terms of position and momentum, where function come sit. So the wave function here may represent. We are going to take a wave function, and wave function is represented by like this. So what we are going to do is, last time हमने Schrodinger equation की थी. So this time we are going to see the solution of Schrodinger equation, the stationary states in different conditions. When we have a particular general differential equation, है ना, उसका solution in particular case, or this is what we are going to see it. So before we are going to see how we are going to choose this wave function psi if it's represented in terms of energy and momentum. So if a wave function psi has a definite value of energy, and there is uncertainty in the momentum and energy of the wave state, so there is a complete ignorance of position of particle. And the transition time which is taken. Last time हमने, if you remember, हमने यहाँ किया था t minus t naught. That was equivalent to those stationary states. हमने कहा था for stationary states जब उसका value constant आता था, so it represented the Schrodinger equation का solution. अब मसला हमारे पास ये है कि जो since we normally in quantum mechanics we normally take discrete values, है ना? But energy exchange can be continuous. मगर जो atoms है, for example, atoms के electrons हैं, normally हम लेते हैं, we take ground states. Ground states means जो हमने कल किया था, ground states will correspond to those stationary states. ठीक है? Ground states will correspond to, but those ground states are maybe electrons. They are at the ground state, but normally जो atoms या electrons हैं, they are continuously vibrating ऊपर नीचे, है ना? Even those randomly excited states, which we, so they should also correspond to some solutions of this wave function psi, जिसकी जो energy exchange है, which we normally can take as stationary states also. So even though जो excited states होते हैं, they will also take energy exchange in some discrete sense, but उनका भी एक state होगा, ठीक है? So अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा wave function psi है, how we can determine stationary states, ground states, and time of transition t and energy, इनका क्या relation है आपस में, ठीक है? So that's it. So for example, psi of RT, so अगर हमारे पास psi of RT, it's a wave function, it's basically given by CE exponential of minus iota by h, et psi of E R, ठीक है? So this is the superposition of, this is a wave function, है ना? Psi, it's dependent upon, this is a oscillatory wave, है ना? E to the power x.
तो ये बेसिकली सो इसका इट्स बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेव्स व्हिच वी आर इंटरेस्टेड इन। सो जो हमारे पास अगर हमारे पास है सो व्हाट आर द वैल्यूज which it is going to take this wave function after this thing, which we normally say it's a stationary state। ठीक है, अब वो वैल्यूज डिजेनरेट है कि नॉन डिजेनरेट है। डिजेनरेट यू नो if you know your things whether particular values का solution आएगा कि there are infinite solutions। the way you solve जो linear equations में है ना, sometimes you solve lambda x is equal to a, so you have whether it's a linearly dependent। हाँ हाँ हमने मतलब सोल्व मतलब कि कैसे आ रहा है इसका एनर्जी ऑपरेटर है। हाँ हाँ तो हम कहते हैं किसी से मतलब ये मतलब कि हमें कि कैसे आ रहा है। हाँ वो showed it, you did not come in that। आपने बताया कैसे। Yeah, that was a particular step, एक step that I'll take a separate class। वो step वहाँ से I said it you do it as a work, as your homework, है ना? That was basically step of this equation, this thing। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर को सारे हमारे उसमें उसको करते हैं कि कैसे है एनर्जी ऑपरेटर या मोमेंटम ऑपरेटर। So I'll just do one further class where we'll just show it exactly in explicit way, where we can calculate the corresponding operator to energy, corresponding operator to momentum, and particular expectation value हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, so that's an exercise, we will do it। ठीक है, so in today's class what we are interested in कि जो discussing the solutions of this wave function psi, which correspond to normally we are interested in the state। पहले हम started with time dependent Schrodinger equation, फिर time independent Schrodinger equation and relation previous class time dependent and time independent relation हम Schrodinger equation को relate किया for particular value of stationary states where t minus t naught का कुछ वैल्यू आएगा। अब वही सोल्यूशन स्टेशनरी स्टेट्स को हम इन सम रियलिस्टिक सिनेरियो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर गोल। सो फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस कौन होंगे फिजिकली, बिकॉज इन क्वांटम मैकेनिक्स द सॉल्यूशंस जो हमारे पास हैं सो इट्स डिस्क्रीट पर्टिकुलर वैल्यू, दे डोंट टेक कंटिन्यूअस वैल्यू। तो वही तो है, सो द एनर्जी एक्सचेंज आर डिस्क्रीट। तो बट ये हमारे पास जो साई का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट इट और हाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम कहते हैं वर्क्स, ये सुना है नाम वर्क्सियन, है ना? तो अगर हमारे पास वन डायमेंशनल, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब वर्क्सियन को हाउ वी कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन व्हिच इज टू सॉल्यूशंस ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? ठीक है, तो टू डायमेंशनल सॉल्यूशन मींस इट्स इन द वे द साइज इट्स इन। अब ये है कि ये कहां से आ रहा है, कैन कम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना? यहाँ पर जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है आई डी साई बाई डी टी, ये है ना, इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी। अब ये है ना एक्स वाई जेड, यहाँ पर इट कैन कम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना? कहां से आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे। ठीक है, यहां पर ये है ना, सो इसमें दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। सो इसमें फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन आएगा, फॉर एग्जांपल इन केस v का वैल्यू 0 होगा, तो इट्स अ पीरियोडिक पोटेंशियल। सो इसका कहते हैं डिजेनरेसी इज टू फोल्ड, डिजेनरेसी इज टू फोल्ड अगर v का 0 है ना।
है ना, ये हाउ यू सॉल्व a पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. या अगर हम इधर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बी इधर x will approach to plus infinity or x will approach to minus infinity or both, or if the solution approaches zero, the solution approaches zero for both x is equal to plus minus infinity, then it corresponds to bound state. It corresponds to bound state. The solution जो होगा it will be bound. It will be bound. That's it. अब ये है कि if we want to जो अगर if you have some understanding of real analysis, तो real analysis में आप क्या करते हैं ना, you take limits from both sides. ठीक है, epsilon minus delta definition है ना, limits from epsilon plus delta or epsilon minus delta. So if you want to see it that way, you can also have दूसरा ये solution है ना यहाँ पर d side, d इसको इंटीग्रेट करो both sides, ठीक है, तो ये साइड यहां से आएगा, ये dt यहां से आएगा. So the equation will take the form ऐसे psi का वैल्यू, ये d side by dt इंटीग्रेटेड, so it will have a value, but psi का हम लेंगे वैल्यू x naught plus epsilon and x naught minus epsilon. ठीक है, so the equation का solution जो हमारे पास आएगा, it will come out to x naught minus epsilon, x naught plus epsilon, है ना, तो it will come out to be 2m by h square. चलो ये उधर करेंगे, the solution will come out to be like this, vx minus e psi of x dx. तो or the solution will have this form psi of x naught plus epsilon minus psi of x naught minus epsilon. That will be equivalent to x naught minus epsilon psi of x dx. अब ये इसमें ये है कि if it is like that, so the joining condition, so अब ये है कि wave function and its slope should match continuously. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि है ना एक साइड से या नहीं लाइक दिस, इस साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है या, सो यू जस्ट चूज सम x, उसके x प्लस एंड x माइनस psi का वैल्यू, evolution of wave function along that delta function, how it will evolve along it. If for example if we have Fourier analysis which says that if the initial wave packet हमारे पास ऐसे है, तो जो एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्सपेंशन ऑफ जो हमारे पास अभी इक्वेशन थी, ये दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम जो ले रहे थे अभी, c exponential of minus iota h et exponential of iota px by h. इस इक्वेशन का एक्सपेंशन जो होगा, it will come out to be uniquely defined. Then we have for h, so d psi by dx, d psi by dt is equal to h square by 2m d2, ये है ना, ये d2 x by dx square है, d2y by, for v is equal to 0, it will be more or less for, since we are concentrating in only in x plane, so ये dx square आएगा, not dy square, not dz square. And if for physical interest, for psi or 0 means so the value of the wave function will be psi of इसका, ये है ना, ये rt. So for r t is equal to 0, ये आएगा exponential of e to the power t आएगा 0, तो जो वैल्यू आएगा wave function का
at time, that's an which corresponds to the initial condition, it will come out to be CE psi ER. और psi of RT हमारे पास आएगा, it will come out to be CE exponential of minus iota by h ET psi of ER. ठीक है? So it's a basic equation. For time t is equal to 0, it will have this solution. ठीक है? And generally it will have this solution. अब इसमें एक और चीज़ है, one last thing, then I'll stop. The thing is that if we change, जिस तरह हमारे पास न्यूटन्स लॉज है ना, d2x by dt स्क्वायर है ना, is equal to f is equal to m, हम क्या कहते हैं? It's time invariant. अगर टाइम को माइनस टी के साथ के स्क्वायर है ना, तो इट डजंट डिपेंड. फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम में न्यूटन्स लॉज और they don't change anything. If we change the value of time, means forward डायरेक्शन में करोगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में करोगे. अब इन द सेम कंटेक्स्ट अब श्रोडिंगर इक्वेशन में भी है ना, डी साई बाय, यहाँ भी वेव फंक्शन ही इवॉल्व करा है विज़ावी टाइम. अब ये है कि हाउ डू वी इंटरप्रेट थिंग्स व्हेन वी आर गोइंग टू सी देम विज़ावी how we are going to see things vis-a-vis if we change t vis-a-vis t, तो हम हमारे पास ये होगा iota h d psi by dt. So it's as if we have psi and psi conjugate. Psi conjugate के में है ना a plus iota b, psi conjugate will give us a minus iota b, है ना psi. So you have psi conjugate will represent the backward direction in time, and psi will represent the positive direction in time. So which will correspond to our definitions of past and future. Past and future. So from time t is equal to 0, psi function future में जा रहा है या psi function past में आ रहा है. ठीक है? उसका evolution in space क्या है? From past present है या present to future है? Backward से present है या present से forward? So but here psi क्योंकि complex number है, जो psi conjugate will represent psi minus t and psi will represent t. So it will be del square psi conjugate or minus t plus v of r psi star or minus t. अब यहां हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो है दिस इज द टाइम रिवर्सल सॉल्यूशन, टाइम रिवर्सल सॉल्यूशन ऑफ किसका? इस इक्वेशन का, है ना, अपनी इक्वेशन या इस इक्वेशन का जो स्टार्ट 3.1 इफ यू स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट में हमने ऐसे किया, और t इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2n डेल स्क्वायर साई, और यहाँ माइनस t है, यहाँ t आएगा, यहाँ v ऑफ r साई और t. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द टाइम रिवर्सल सॉल्यूशन साई का इन टर्म्स ऑफ साई स्टार. ओनली वी हैव a factor of t or minus t that will correspond to conjugate and the psi conjugate. तो इसी को हम कहते हैं इनवेरियंस अंडर टाइम रिवर्सल. Invariance under. So if you have a psi conjugate, it will correspond to the solution when t is replaced by minus t. ठीक है? So that's it. So we because other students are not there, we stop.
So anyway, हाँ